This conference will now be recorded. So मैंने आपको जैसा बताया the cloud is a service. It is the name of the service, and this service provided by the multiple cloud service provider. So and this service multiple vendors. This service provided by multiple vendors such as AWS for Amazon, Azure for Microsoft, and GCP is a Google. So guys, the cloud is the name of the service, and this service provided by the multiple vendors, and these such as like AWS is a parent company of Amazon, Azure parent company of Microsoft, and GCP parent company of Google. These all cloud service provider provide the same services. So is it a multiple की spelling mistake हो गया, so correction कर लेना उसको. Now when you use any service of cloud service providers, pay as per the uses. अगर आप क्लाउड की कोई भी सर्विस यूज करते हो तो उसको आपका पे करना पड़ेगा एज पर द यूजेस. बेसिक द ऑल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सर्विसेज. ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है 3 टाइप्स की आपकी बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. And these services is called infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. These are the 3 services provided by these cloud service provider. Now कि अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस यूज करते हो, यू कैन पे एज पर दी uses. Got it? Now when you deploy a resource in a cloud, like you deploy a virtual server, or either you deploy any virtual storage, and now either you deploy any virtual database. These are the resources. So when you deploy any resource in a cloud, you can pay as per the uses. So आप कोई भी सर्विस क्लाउड की अगर कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उसका अगेंस्ट आपको पे करना पड़ेगा. Either you use a virtual server or virtual machines. वो कोई भी हो सकती है, either Linux storage, virtual storage, and look like a virtual database. So guys, these services, अगर आप these are the resources, ये सारी की सारी resources आप cloud पे अपने deploy कर सकते हैं. If you create any virtual machines, you can pay as per the usage. You create any virtual storage or virtual database, you can pay as per the usage. And these infrastructure is a part of IaaS. If you create a infrastructure in a cloud, अगर आप cloud पे कोई भी infrastructure create करते हो, so this is a part, like infrastructure का part क्या है? The virtual is a machine is also is a part of infrastructure. Storage is a part of the infrastructure, and database is a part of infrastructure. So that means कि if you create if you use cloud, or in a cloud you can create any server, networking, virtual machines, virtual storage, virtual database. That means you are using which service? You use infrastructure as a service of cloud. Got it the point? Mukesh, Siddharth, Srishti.
कि अगर आप कोई भी सर्वर बना Yes, रहे sir. हैं या आप कोई भी स्टोरेज बना रहे हो या कोई वर्चुअल मशीन कोई भी डेटाबेस डिप्लॉय कर रहे हो क्लाउड पे, तो उसका मतलब है आप क्लाउड की कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, यू यूज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड। नाउ सेकंड की सपोज करिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है लाइक क्रिएट एक्स वाई जेड ऐप या एक आरोग्य सेतु ऐप आपको डिप्लॉय करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा। दिस इज अ इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब है फिजिकल हार्डवेयर, फिजिकल एंड वर्चुअल हार्डवेयर। यानी कि अगर आप ऑन प्रीमाइस बनाते तो ऑन प्रीमाइस में आपको यही सर्वर खरीदने पड़ते, लेकिन क्लाउड पे हमारे पास क्या है, यही सर्वर हमें वर्चुअली यूज करें। सेकंड कि अब आपको एक एक्स वाई जेड ऐप बनानी है, यू कैन यूज एक्स वाई जेड ऐप। और एक्स वाई जेड ऐप का दो चीजें होती हैं। एक होता है कि कोई भी अगर हम एक आरोग्य सेतु ऐप यूज कर रहे हैं तो आरोग्य सेतु ऐप पे एक कैंडिडेट क्या करेगा, एक कैंडिडेट तो क्या करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। दूसरा, उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहीं ना किसी लोकेशन पे जाके सेव होगी। सेम एज कि अगर अब हमें एक आरोग्य सेतु ऐप बनाने, तो नाउ सेकंड लेयर इज इंट्रोड्यूस कि हम वी हैव इंस्टॉल अ जावा। मैंने यहाँ पे जावा इंस्टॉल करा और जावा इंस्टॉल करने के बाद आई एम जस्ट कनेक्ट दिस सर्वर, दिस ऐप विद स्टोरेज और एज वेल एज डेटाबेस। तो जो डेवलपर हैं जो आरोग्य सेतु ऐप बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, जब उन्होंने नेक्स्ट ऐप बनाई तो ऐप की कनेक्टिविटी किससे कर दी, स्टोरेज और डेटा की। अगर कोई भी इस ऐप को अपने मोबाइल फोन पे या वटेवर कहीं भी लैपटॉप पे लॉगिन करता है, तो वो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन तो फिल करेगा ना, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, दिस इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे जाके तो सेव होगी, यस और नो। तो वो जो बैकएंड Yes, sir. लोकेशन है, दिस इज अ बैकएंड लोकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वो डेटा आपका स्टोरेज अकाउंट में सेव होता है या डेटाबेस, डिपेंड्स ऑन माय कोडिंग। तो दिस इज अ सेकंड लेयर जिसकी हेल्प से, यानी कि हमने यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर डाला, फॉर एग्जांपल वी हैव इंस्टॉल अ जावा। हम जावा की हेल्प से अपनी एंड्रॉइड बना रहे हैं। तो जावा इज अ सेकंड लेयर, इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लाइक कि अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय ऐप बनानी है, तो उसके बाद यू नीड अ प्लेटफॉर्म। लुक लाइक कि अगर आपको एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक सर्च सिस्टम लिया, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा, एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके आपने क्या करा, यू कैन इंस्टॉल अ जावा। तो दिस इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और आफ्टर दैट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या चीज बन के आई गाइस, हमारी एक ऐप बन के आई, जिस ऐप का हम यूज करेंगे। दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। गॉट इट? इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट? लाइक इन अ गूगल ड्राइव, अगर आप गूगल पे या आप अपनी ईमेल आईडी से करते हैं, तो वहां पे देखते हो आजकल ऑनलाइन एक्सेल, ऑनलाइन एमएस ऑफिस आने लग गया है, यस और नो Yes, गाइस? sir. तो दिस इज अ कंप्यूट लैब, दैट इज दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ इसका मतलब क्या है कि उस एक्सेल को यूज करने के लिए ना तो आपको किसी लैपटॉप के लिए जरूरत पड़ी और ना ही आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा। आपने डायरेक्ट उस पर ऐप करा और आपके पास एक्सेल खुल के आ गया और यू कैन स्टार्ट द वर्क। तो सारी चीज बैकएंड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। देखा गाइस, गूगल सीट आती है। Yes, sir. सिद्धार्थ, सृष्टि, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. So this is the basic introduction of cloud. Now I'm just move for Yes, sir. next. हाँ बताइए. Okay. Then next moving next part is a cloud service provider. If you are using Azure or either any cloud. If I'm just start for the Azure cloud, so Azure cloud के अंदर just कुछ हमारे important terms होते हैं. The important terms is look like a reason. सबसे पहले I'm explain you the reason. So reason, what is a reason? So is it nothing? The reason is a physical location of Azure data centers. Reason is a Azure data center. The Azure, the Microsoft
deploy physical data centers in Azure cloud center in multiple location such as US, India, Australia, Canada, etc. So the reason is a physical location of Azure data center. The Microsoft deploy a physical Azure data centers in a multiple location. Azure physical data center in multiple locations such as US, India, Australia, Canada, etc. When you deploy any resource, when you deploy, deploy का मतलब है guys create. When you create or deploy, when you deploy any resource in cloud, in Azure cloud, what is the meaning of resource? So resource का meaning guys same कि if you deploy any virtual server, virtual storage, and virtual database and other resource, either load balancer or networking, whatever जो भी हम one by one cover करेंगे. So in Azure cloud, first you select रीजन. लुक लाइक द सेम कि अगर आपको अपना घर भी बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने उस घर के लिए पर्टिकुलर एक कंट्री का सिलेक्शन करोगे कि हमें जो अपना घर बनाना है हमें किस लोकेशन पे किस कंट्री के अंदर डिप्लॉय करना है. यस और नो? सिद्धार्थ, सृष्टि, मुकेश, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट, there is no any connection between reason by default, but if you provide, but when you connect, wait guys, but when you connect different reason, use use VNet pairing सर्विस ऑफ क्लाउड. तो गाइस वीनेट पेयरिंग एक हमारी सर्विसेज है, ठीक है, जिसकी हेल्प से, वीनेट का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क, तो वीनेट पेयरिंग हमारी एक सर्विस है. विद द हेल्प ऑफ दिस पेयरिंग सर्विस हम अपने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक कि इफ दिस इज अ रीजन, लाइक दिस इज अ वन रीजन, this is a second reason, and this is a third reason. These are the three reasons. That means the three different location is look like this is a India, it is like a US, and it is look like a Australia. So these regions are not connected with each other by default. ये regions आपस में connected नहीं है. Okay, so ये है that when you, there is no any connection between region by default, but we can do, but when you connect a different region, use VNet pairing service on cloud. अगर हमें इन regions को communicate कराना चाहता हूँ
अगर मैं इन रीजन्स को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि हम डिफरेंट रीजन्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं? बट उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी आर यूजिंग अ वीनेट पेयरिंग। इन रीजन्स के लिए हमें अपनी वीनेट पेयरिंग सर्विस का यूज करना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ वीनेट पेयरिंग वी प्रोवाइड द कम्युनिकेशंस बिटवीन different reasons. Got it the point? Yes, sir. Yes, sir. Siddharth, Srishti, Yes, sir. Yes, sir. within reasons, the all resources is connected with each other. Within reason, all resources is connected with each other with the help of VNet. VNet का मतलब है इस वर्चुअल नेटवर्क. लाइक अगर आप विद इन रीजन, अगर आप विद इन रीजन भी अपने लाइक यू क्रिएट अ सर्वर्स, तो अगर आप विद इन रीजन भी अपने सर्वर्स क्रिएट करते हो, लाइक दिस इज अ सर्वर 1 and this is a server 2, and if you provide the communications between these regions, तो यहाँ पर भी आपका VNet यूज होगा, नॉट इन VNet पेयरिंग. यहाँ पर जो आपका गाइस यूज होगा, इट्स यूज इन VNet. तो यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क. सो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क you can provide a connection between servers in within region. तो वर्चुअल नेटवर्क कहाँ पे यूज हो रहा है और वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग कहाँ पे यूज हो रहा है? तो वीनेट का मतलब भी गाइस वर्चुअल नेटवर्क है. तो वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग यूज होती है डिफरेंट रीजन्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, एंड वर्चुअल नेटवर्क यूज होता है विद इन रीजन कम्युनिकेट कराने के लिए. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन? व्हाट इज Yes. रीजन? Now the second option is coming for a zone. So if I explain a zone, zone work within region. पहली बात तो जॉन जो है वो आपके वर्क करते हैं विद इन रीजन. अजूरे, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्लाउड, some reason support multiple zone. The multiple zone means multiple data centers. Multiple zones. The Microsoft Azure cloud some reason support a multiple zone. That means a multiple data centers. This data center is called John. इन्हीं data centers को guys John बोला गया. The same, the zone also connected with each other within region with the help of VNet. VNet. तो जो भी है यानी कि हर जोन के नहीं, कुछ जोन्स ऐसे भी हैं लाइक अगर जियोग्राफिकल एरिया से लाइक इंडिया, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, तो अजूर को पता है कि इज नॉट सफिशिएंट कि एक सिंगल डेटा सेंटर इतनी बड़ी कंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं होगा. तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिप्लॉयमेंट कर दिया है कि मल्टी जोन्स करा दिए. द मल्टी जोन्स, it's your choice when you deploy
infra in cloud. When you deploy infra in Azure cloud, choice is yours. Deploy infra in single zone and multi zone. तो गाइस सिंगल जोन मल्टी जोन का मीनिंग क्या है कि गाइस देखिए सपोज करिए दिस इज माय रीजन, this is the one region is available, look like I'm select US, this is my East US region, and in this East US region there are the different zones is available, there are more than 2 or 3 zones is available. Suppose करो यहाँ पे 3 zones is available, these are the 3 zones, that means the 3 independent data centers is available, and these all data centers is connected through a virtual network. When you create any VNet, and this VNet, with the help of this VNet, these all data centers are interconnected with the help of VNet. Now guys, it's your choice कि you can deploy infra in a single zone and multi-zone. What is the meaning of single zone? The point is when your choice is here, you can deploy a server in a same zone, or either you deploy a server in a different zone. It's your choice. Got it, guys? Sir, I have a question. Yeah. The question is that is it possible, like all the zones would be connected each other by default in the same location Yeah, it's connected with each other. by default? Not in by default. When you create a VNet, then it's connected. Okay. Got it? आपको Yes, sir. वर्चुअल Right. नेटवर्क क्रिएट करते हो तब वो कनेक्ट होते हैं. गॉट इट? क्योंकि बाय Right. डिफॉल्ट एजूरे पे कोई वीनेट बना नहीं होता, तो वहां पे आता है कि जब यू क्रिएट अ वीनेट, जब भी आप वीनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक क्लास ए का आईपी क्रिएट करता है, बट कोई बाय डिफॉल्ट वहां पे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है. तो आप जिस भी रीजन में वीनेट क्रिएट करेंगे वो उन सारे को आपस में इंटरकनेक्ट कर देगा. Got it? Now you can see the options key, like what is the benefit, like this is a server 1 and this is a server 1 and server 2 in a same zone, and I'm create a one more infrastructure, this is a server 1A or server B. I'm just deploy this infrastructure in a different zones. What is the benefit of this? The benefit of this, when you deploy a single zone, if your any server, any single server is goes down, अगर आपका कोई भी सिंगल सर्वर जाता है तो आपको सेकंड सर्वर सपोर्ट दे देगा. बट इफ अगर आपका जोन डाउन जाता है तो उस केस में क्या होगा, जितने भी इंटायर सर्वर कनेक्टेड है वो भी सारे के सारे डाउन हो जाएंगे. गॉट इट एवरीवन? व्हेन यू डिप्लॉय अ सिंगल जोन implementation. Siddharth, Srishti, Mukesh. Yes, sir. Here's the benefit. If you create a multi-zone infrastructure, so like if you one zone is server is goes down तो भी आपकी सर्विस एक्टिव है, and if the John is goes down, so तभी आपकी सर्विस एक्टिव है. So that's it's your choice. Choice is your, you deploy a infra in a single zone or multi zone. Siddharth, got it the point of zone? Yes, sir. The next option is आता है the resource group. Azure cloud में एक और important fact आता है resource group. What is resource group? The resource group, you can create
you can create a resource group to any reason. It is a collection of Azure cloud resources. When this resource deploy in same region or same zone and other region और अदर जोन। तो क्या देखिए सिंपल सा है कि अगर आप लोग क्या है सिंपल सा है कि अगर आप यू कैन क्रिएट थ्री जोन्स, हमारे थ्री जोन्स हैं या थ्री रीजन इज अवेलेबल, लाइक देयर इज वन रीजन इज अवेलेबल इन इंडिया, second reason is available in US, and third reason is available in Canada. Now the choice is you can deploy a virtual server for every reason. You deploy a virtual storages to the every reason. सो चॉइस इज यूर कि अगर आप अपनी रिसोर्सेज को एक सिंगल पैनल पे देखना चाहते हैं, सो चॉइस इज यूर, यू क्रिएट अ रीजन वाइज रिसोर्स ग्रुप या आइदर यू क्रिएट अ मल्टी रीजन कॉमन रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप का मतलब है कि अगर मैं इस ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे को बता देगा कि देयर इज अ इन दिस रिसोर्स की लाइक आई एम क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप विद द नेम RG1, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने क्या करा है, आई एम जस्ट ऐड इनसाइड दिस रिसोर्स ग्रुप इन दिस रीजन और एज वेल एज दिस रीजन। जब मैं इस रीजन में जाऊंगा और जब मैं आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस रिसोर्स ग्रुप, तो ये बताएगा द लाइक VM1 इन US, like a storage one in US, like VM1 in Canada, like VM storage one in Canada। तो यहाँ पे दिखा देगा कि एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप पे आप देख सकते हैं कि आपने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कराया है वो कहाँ कहाँ पर है। लाइक अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप पे क्रिएट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेरा एक यूएस के अंदर एक वीएम बनी हुई है, ठीक है ना, एक स्टोरेज भी बना हुआ है, सेम कनाडा के अंदर भी मेरी एक वीएम बनी हुई है, एक स्टोरेज बना हुआ है, यानी कि एक सिंगल डैशबोर्ड पे मैं सारी की सारी चीजों को ट्रैक कर रहा हूँ। बट अगर मैं कंट्री वाइज बनाता हूँ तो लाइक मुझे अब देखिए यहाँ पे इंडिया की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि मैंने जब इस रिसोर्स ग्रुप वन बनाया था तो उसमें मैंने यूएस और कनाडा की रिसोर्सेज को ऐड करा था। तो चॉइस इज यूर, यू कैन क्रिएट अ इंडिविजुअली रिसोर्स ग्रुप एज पर द रीजन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स यूजर चॉइस, इट्स योर चॉइस, क्रिएट resource groups for each resource। तो ईच रिसोर्स का मतलब है कि आप रिसोर्स ग्रुप सिंगल रिसोर्स के हिसाब से बना सकते हो, लाइक VM1 के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप, स्टोरेज के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप, डेटाबेस के लिए अलग रिसोर्स ग्रुप, या आइदर क्रिएट कॉमन रिसोर्स ग्रुप। आप कॉमन रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हो, लाइक कि आप चाहते हो कि इंडिया में आपने 20 चीजें डिप्लॉय करी हैं, आप उन सारी की सारी चीजों के लिए भी एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, और आइदर यू क्रिएट कॉमन रिसोर्स ग्रुप फॉर ऑल रीजन। और चॉइस इज योर कि आप जितने भी रीजंस हैं
उन सारे रीजंस के लिए भी एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो. सो डिपेंड्स, वन ऑफ वन करना चाहते हो या वन टू ऑल करना चाहते हो या वन टू मैनी करना चाहते हो, चॉइस इज योर. इज इट क्लियर मुकेश, सिद्धार्थ? So Yes, sir. when you deploy any resource in Azure cloud, first create a resource group, and it's a mandatory, guys. रिसोर्स ग्रुप मैंडेटरी है कि जब तक आप अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप कोई भी चीज डिप्लॉय नहीं कर सकते क्लाउड पे. क्लियर? सिद्धार्थ, गॉट इट द पॉइंट? व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप, Yes, sir. what is zone, what is reason? And now the part of the introduction of cloud. Now I'm just moving for the next point. One, two, three. Now there's a VNet. What is VNet? VNet का मतलब है guys virtual network. What is VNet? VNet is called a virtual network. When you deploy any resource in cloud, first you create a virtual network, because virtual network provide connections between cloud resources. For example, कि अगर आप कोई भी किसी भी रीजन पे अपना वर्क करना चाहते हो, लाइक दिस इज लुक लाइक इंडिया रीजन और ईस्ट यूएस रीजन. अगर आप किसी भी रीजन पे, you can create a two servers or more than two servers. तो गैस इन दोनों सर्वर्स को कम्युनिकेट कराने के लिए ना आपको एक वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट करना पड़ेगा. गॉट इट? So the virtual network VNet is a network of cloud, and it's a mandatory. The every servers are connected with this virtual network. जब तक आपकी मशीन्स इस वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगी, जब तक ये मशीन्स आपस में डेटा शेयरिंग नहीं कर पाएंगे. After connect the virtual machine with the VNet, this is connected and it's sharing the data. Got it the point? Got it? Yes, sir. When you create a virtual network, you can use any class of IP address. If you create VNet in cloud, use class A, B, C IP addresses. आप क्लास A, B, C IP एड्रेस का यूज कर सकते हो और IPv6 एड्रेसेस. So choice is your कि आप क्लास A
का एड्रेस यूज कर सकते हो, बी का यूज करना चाहते हो, सी का यूज करना चाहते हो. When you create a VNet in a cloud, VNet in cloud also create a subnet. आपको सबनेट भी क्रिएट करना पड़ेगा. द सबनेट is a logical boundary of your network. The subnet represent how many IP host connected with each other. So guys, अगर आप कभी भी कोई भी VNet क्रिएट करते हो, लाइक कि सपोज करिए दिस इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम इज कॉल्ड ICCP Infotech. And in this organization there are the 4 branches is available, or either a 4 different departments is available. 4 branches you calculate, or either you calculate a departments, and this all department is this particular organizations. And now this is a like a HR department, and HR department, or either I'm asking ki this is like your Mumbai branch, and the Mumbai branch is required is look like 50 servers. In a one more branch is available in a Noida branch is required 100 server, and look like one more branch is available in like a Pune. The Pune branch is required is like a 25 servers. That means कि the 50 servers need a 50 IPs. Yes or no? The 100 servers need 100 IPs. And same as the Pune, the 25 server need a 25 IP. So now guys, my company is buy a IP. सबसे पहले मेरी कंपनी क्या करेगी, एक पर्टिकुलर एक किसी रीजन के अंदर जाएगी. इन दिस रीजन में जाके लाइक आई एम जस्ट गो इन ईस्ट यूएस, मैं ईस्ट यूएस रीजन में गया. इन दिस ईस्ट यूएस रीजन में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप. मैंने यहाँ पे जाके सबसे पहले क्रिएट करा एक रिसोर्स ग्रुप. दिस इज माई रिसोर्स ग्रुप. सो मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं तो पहले आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ आई एम जस्ट सेलेक्ट गिव द रिसोर्स ग्रुप नेम इज माई ईस्ट यूएस रिसोर्स ग्रुप RG. दिस इज अ नेम. नाउ अब यहाँ पे मेरे को एक VNet क्रिएट करना है. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ VNet. So I'm just create a VNet. When you create a VNet, in this VNet you can give the name or IPs. यानी कि आपकी कंपनी कहेगी कि जो भी आप VNet बनाना चाहते हैं उस VNet का नेम क्या रखना चाहते हो. So like I'm just put the name of this VNet is like a VNet 1. So this is a name कि मैं जो यहाँ पे VNet बनाना चाहता हूँ, I'm just give the name of VNet 1. सेकेंड इट्स आज द आईपी की आप टोटल कितने आईपी का यूज करना चाहते हैं. पुट द नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं CIDR. CIDR का मतलब है आई एम यूजिंग आईपी 192.168.1.0/24. तो नाउ द मेरी कंपनी ने जो आईपी यूज करने हैं वो ये यूज कर रहे हैं 192.168.1.0. यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा CIDR. CIDR का मतलब है गाइस the number of IP is 192.168.1.0/24. 24 का मतलब है गाइस कि अगर आपकी कंपनी ने यहाँ पे 192.168.1.0/24 एड ऑन करा है तो 24 का मतलब है दिस इज अ क्लास
IPv4 एड्रेस, और 24 का मतलब क्या है गाइस, इन 32 बिट्स में से 24 बिट्स ऑन करी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 6 7 8। दैट मीन्स कि आपके पास जो भी बिट्स हमारी 1 है उनको हम बोलते हैं ऑन बिट्स, और जो भी बिट्स हमारे 0 है उनको बोलते हैं हम ऑफ बिट्स। दैट मीन्स दिस इज अ नेटवर्क बिट्स जिसको हम बोलते हैं ऑन बिट्स, एंड नेक्स्ट है आपकी ऑफ होस्ट बिट्स जिनको हम बोलते हैं ऑफ बिट्स। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ आईपीस निकालने की आपके इस नेटवर्क में आपकी कंपनी ने कितने बाय करे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर कितनी ऑफ बिट्स हैं गाइस हमारी, हाउ मेनी ऑफ बिट्स, तो 24 में से 32 में से कितनी बिट्स जीरो हैं सिद्धार्थ, हाउ मेनी बिट्स जीरो, 8. 8, दैट मीन 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। यानी कि मेरी कंपनी ने Right. कितने आईपीस बाय करे हैं, 256 आईपीस बाय करे हैं। गॉट इट द पॉइंट गाइस, कैसे आया ये, Yes, Yes, sir. तो नाउ कि मेरी कंपनी ने 256, दैट मीन्स कि मेरी कंपनी ने जो वीनेट बनाया उसमें वीनेट का नाम दिया वीनेट 1 और सीआईडी दिस। अब मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है 50, नोएडा 100, पुणे 25। सो नाउ कि कंपनी ने टोटल 256 आईपीस बाय कर लिए। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूट यही 256 आईपीस को ने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज IPv4, और आप बिटवीन यहाँ पर आप अपनी जो बिट्स है ना वो बिटवीन आप यहाँ पर दे सकते हो 8 टू 30। 8 टू 30 वो आपको कोई भी बिट्स कर सकता है, और आपका सॉल्यूशन है लुक लाइक कि आई एम जस्ट एडिंग कि मैंने यहाँ पे नेटवर्क अपना स्टार्ट करा 192.168.1.0/25, यानी कि अब मैंने यहाँ पे जो एड ऑन करा है गाइस, आई एम जस्ट एडिंग अ 25। 25 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1. This is a 25 bits and the remaining 7 bits is 0. That means 2 to the power is 7 is equal to 128. That means कि 192.168.1.0 से लेके guys it distribute the IP is 192.168.1.127. Second group is I'm start कि 192.168.1.127 पे अगर मेरा पहला ग्रुप फिनिश हुआ है तो next IP start on 128. Now I'm adding a 26. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 2 3 4 5 6 7 8. This is a 24 bits, and now 25 and 26. The remaining bits is 6. So now the 2 to the power 6 is equal to 64, यानी कि इसने ये सेकंड सबनेट मैंने बनाया है तो इसमें आ रहा है 64 आईपी। 64 आईपी का मतलब है कि मेरे पास 256 आईपी है जिसमें से 0 टू 127 मैं ऑलरेडी नोएडा के लिए एलोकेट कर चुका हूं। नाउ कि 127 तो मेरे पास चले गए, तो 128 से आईपी स्टार्ट होंगे, तो 128 से स्टार्ट होंगे, तो लाइक 192.168.1.128, और ये मेरे कहां तक जाएंगे, 64 ही मेरे आईपी आने हैं इस ग्रुप में। तो नाउ 192.168.1.191. Now the next network कि मेरा अगर 191 पे फिनिश हुआ तो 192.168.1.192 से मेरा स्टार्ट होगा। आई एम एडिंग अ 27, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.2 3 4 5 6 7 8.123. These are the 27 bits, 1 2 3 4 5, and now the 2 to the power 5 is equal to 32. That means is a 192.168.1.192 से लेके guys is it 192.168.1.223. तो गाइस ये यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप यानी कि मैंने सबनेटिंग करी है, और सबनेटिंग की हेल्प से मैंने अपने 256 आईपीस को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में
एलोकेट कर दिया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉट इट द पॉइंट गाइस? ये कैसे हुई है सबनेटिंग? दिस इज अ सबनेटिंग। एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करा है मैंने। एंड नाउ आई एम जस्ट ऐड कि दिस इज फॉर नोएडा, this is for look like Mumbai, and this is look like for Pune. चलिए वन लास्ट में आपने जो किया है 192.168.1.223 223 कैसे आया? ये 192 में 32 ऐड ऑन करोगे? 191 में आप 32 ऐड करो। 191 में 191 प्लस 32 ओके कितना आएगा? ओके ओके वो 190 अच्छा क्योंकि 199 में करेंगे तो 191 तो 191 खत्म हो गया ना। देखिए आपके पास 100 ओके रुपए हैं, आपके पास 100 टोकन्स है, तो 1 से 50 टोकन्स आपने किसी को दे दिए तो 51 से ही तो दोगे नेक्स्ट, यस और राइट नो? अंडरस्टूड तो मैंने 0 टू यस सर 127 आईपी दे दी, तो नेक्स्ट मेरा 128 से स्टार्ट हुआ, 128 से 191 दे दिया, तो नेक्स्ट मेरा 192 से स्टार्ट हुआ। सिद्धार्थ, ओके गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. सिद्धार्थ, तो Yes, नाउ sir. गाइस, तो सेम की मेरी कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है, तो नाउ आई एम क्रिएट अ 3 सबनेट्स। मैं यहाँ पर 3 सबनेट्स क्रिएट करूंगा। आई एम क्रिएट अ 3 सबनेट, दिस इज these all subnet is a part of this VPC, sorry VNet. So now I'm just create here the subnet, give the name is like name is equal to Mumbai subnet, subnet 1, the CIDR value is 192.168.1.0/25. Second subnets I'm create a name, is it look like Noida, sorry Mumbai में नहीं आएगा, first is Noida, second is it name is in MUMBAI Mumbai, it's SUB subnet 2, and what is the CIDR? CIDR value of the Mumbai is it 192.168.128/26. The next one more subnet is it name is equal to Pune hyphen SUB subnet 3, and what is the CIDR is equal to 192.168 the 1.12191/27. So now guys I'm create a 3 subnet for 3 branches. मैंने तीनों ब्रांचेस के लिए सबनेट कर दिया, और वहां पे मैंने डिफाइन कर दिया कि कितने आईपीस मैंने किस पर्टिकुलर सबनेट्स में दिया, तो उतने ही आईपीस आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? And these all subnets are work under the this VNet. Is it clear guys? यस सर यस Always remember, when you create any subnet in AWS or Azure or any cloud, the cloud reserve 5 IPs to every subnet. वो क्या करेगा, अगर आप कोई भी सबनेट क्रिएट करते हो क्लाउड पे, तो हर सबनेट में से वो 5 आईपीस को रिजर्व कर लेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इसकी रेंज है इज इट 1.0 से लेके 127, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इट्स रिजर्व फॉर अ फर्स्ट NETWOR के नेटवर्क आईपी,
सबसे पहले वो एक नेटवर्क आईपी रिजर्व करेगा जो कि आपका फर्स्ट आईपी होता है ऑलवेज 192.168.1.0। उसके बाद इट रिजर्व फॉर गेटवे, वो एक गेटवे के लिए आईपी रिजर्व करेगा और गेटवे का आईपी होता है ऑलवेज 192.168.1.1 जो पहला वैलिड आईपी होगा। देन प्रिफेयर डीएनएस के लिए एक आईपी रिजर्व करेगा, इज लुक लाइक अ 192.168.1.2 एंड फिर अल्टरनेट डीएनएस के लिए भी एक आईपी वो रिजर्व करेगा, is it IP is called 192.168.1.3 and then broadcast IP, ब्रॉडकास्ट आईपी भी वो क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा। सो दिस इज द लास्ट आईपी 192.168.1.127। तो गाइस हर सबनेट में से वो 5 आईपीस रिजर्व कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट मीन्स कि अगर आपके पास 128 आईपीस हैं तो आपको वैलिड आईपीस कितने मिलेंगे, 123 प्लस 5, 123 प्लस 5, यहां पर आपको कितने मिलेंगे, इज इट 64, दैट मीन्स 59 प्लस 5, ये इस तरीके से आपके डिवाइड हो जाएंगे। नाउ इज 32, दैट मीन्स 27 प्लस 5। तो जब आप सबनेट बनाएंगे, तो जब भी आप सबनेट क्रिएट करेंगे तो वो आपको इस तरीके से दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपके नेटवर्क को। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर गाइस? तो नाउ द हाउ टू Yes, क्रिएट sir. अ, हाँ बताइए, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? So this is a No way question. You can. कि this is a one way कि how to create a subnet. So how to create a VNet. So this is a way you can create. So always remember कि when you create a VNet in for any particular reason, so you can just consider the how many IPs in total IPs in your VNet. First you decide. Second you decide the number of distributions कि आप जो IPs हैं वो कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। Then you just start the subnetting. After this process is done, then you create a VNet. But before creating a VNet, you can select a region or a resource group. Clear, guys? Yes, sir. Now, so enough for today. Continue, guys. Thank you for today's session. Siddharth.